So we are going to do the first ATP of this session. So let's see. ATP is about experimental techniques. And this question, it's on electrolysis, as you can see. What are they saying? The electrolyte is aqueous sulfuric acid. So just on the side, let's write down what our ions are going to be. We're going to have H positive, sulfate 2 negative, and OH negative because of water. H positive is already there. So there's going to be a lot of H positive here from water as well as from sulfuric acid. So at the cathode, we're going to get hydrogen gas because that's the only positive ion we have. For the negative ions, we have hydroxide and sulfate. And so we will only be able to get oxygen gas because of hydroxide ion. So we'll get oxygen. We just have to name it, and that's good enough. And observation is that we'll see colorless bubbles or bubbles of colorless gas. Okay, that's good enough. Now, for the next part, we'll do the same thing. We'll write down the ions that we have, and then we'll see which one will be going on. So copper 2 sulfate aqueous, that means there's the copper 2 ion, sulfate ion, hydrogen ion, and hydroxide ion. Now, you know that copper is less reactive than hydrogen. So copper will be discharged first. So we'll get at the cathode, we'll get copper because that's where the positive ions go. So we'll get copper, which is, and the observation is that pink solid deposits. Okay. And on the other side, we'll get oxygen gas again because sulfate is not going to discharge. All right. State the test and its observation to identify hydrogen gas. Hydrogen, as we know, it's explosive. So the test is that you bring a lighted splint. Okay. So you can simply say that you take a lighted splint. Okay. Or observation will be that you'll see a pop sound. You don't have to write that it extinguishes with a pop sound, because the reason it extinguishes is because it's just a small lighted splint, but hydrogen is actually explosive, and in presence of oxygen it won't extinguish it. If there was a possibility, if you had enough fuel, then it will actually start burning with an explosion. So extinguishing is not the test. The observation should be that you have a pop sound. All right. Name the gas, the O2 as the formula, because we have to name the gas. Okay, so it's oxygen. All right, next part. Suggest two ways the amount of heat supplied is kept constant. Now, what two ways can we have? Obviously, one possibility is that you take the whatever thing you're using to burn this. It could be Bunsen burner. Yeah, so first thing we can do is that we know that this test tube is going to be kept a certain distance away from the source of heat. So you can keep it at a fixed distance. Similarly, usually the sources that we use like Bunsen burner or electric heater, they have these knobs on them, which you can change to increase or decrease the size of the flame. Or if you don't have a flame, the temperature basically. So you can say that you keep the same size of the flame or same amount of gas being burned or something like that. You can turn the gas tap, if you have, you can turn it on to a certain same distance. Okay, so that's how you can make sure that the uh, heat being supplied is constant to both of them. Okay, so just a variable involving the metal nitrate that should be controlled, because we are using metal nitrate and we are basically trying to compare the rate of decomposition of four different nitrates. Then to get a fair comparison, we should use the same amount. Okay, so we'll say that you take the same amount of each substance. You can also say that take the same number of moles of each substance. Okay, and that will tell us
whether we want the same, we have the same amount, and we can make a good comparison. Now, saying same mass would be wrong, because same mass of different things will have different number of particles. Okay, and we are trying to figure out the rate of decomposition of those particles. Okay, the sample that we have, we're trying to see कि किसकी bond strong है, किसकी bond weak है. तो same mass नहीं हम ले सकते, क्योंकि कुछ चीजें heavy होती हैं, कुछ चीजें light होती हैं. So same number of moles चाहिए हमें, same amount of matter चाहिए हमें, same surface area चाहिए हमें ये नहीं चाहिए कि same mass हो. Okay, that will not be a fair comparison. All right, here we have to find the average. What better way to average than just add them up and divide by 3? So we'll simply do that. So we have these thing here, 100, 100, and 150. That's kind of weird. Like, why would something take 150 if it's the same amount? Okay, so what we call these things is that they are anomalous. So we don't involve this. So we cancel this one out. We take the other two. Similarly, in the second one, you can see that there's 300, there's 320, and this one is anomalous. So we'll not include that. So you basically make sure that any anomalous value that you have here, this will be the anomalous value here, this will be the anomalous value. You don't involve that. So 100 and 100 averages 100, 300 and 320 averages 310, 400 and 410 averages 405, and 200 and 200 averages 200. Okay, ये देखें उसने बोला है कि anomalous values नहीं ले. So anomalous values are basically the values that are abnormal, that don't follow the pattern. Okay. All right, which metal nitrate decomposes the fastest? So the one that has the smallest time, so that is lithium nitrate. So we'll say it is lithium nitrate. Okay, that's the one. And what's the explanation? The explanation would be that obviously if it takes the smallest amount of time to decompose, how do we know that it decomposes the fastest? Uska time सबसे कम है. That's it. That's the explanation. उसमें बॉन्डिंग में नहीं जाना है, बिकॉज उसने हमसे ये नहीं पूछा कि वो क्यों ऐसा करता है. वो आपसे बस पूछ रहा है कि आपको कैसे पता है कि ये सबसे फास्टेस्ट है. तो ऑब्वियसली फास्टेस्ट वही होगा ना जो टाइम सबसे कम लेगा. एंड दैट्स व्हाट वील से, दैट इट टेक्स द लीस्ट टाइम. Okay, this piece of equipment is volumetric flask. Volumetric flask is basically used when you want to make a solution and you want to change the volume, you want to increase the volume. तो अगर मेरे पास एक solution है which is of maybe 50 cm cube और मुझे उसको 500 cm cube का बनाना है, तो मैं उसको इसमें ऐड करूंगा और इसको fill up करूंगा 500 तक. It is a very accurate, very precise thing. Reason is that just like a pipette, it also has just one value until which you fill it up. It has a narrow neck, which allows us to make sure that the value is really, really close to what we actually want it to be. So this is volumetric flask. ठीक है. अब A part में उसने पूछा है, name a piece of apparatus used to measure 25 cm cube accurately. That will be a pipette. You can say burette, but pipette is the best. Both of them are fine. And for the apparatus, you can say volumetric flask, or you can also call it graduated flask. All right, next. The student makes up 25 cm cube of sample to 500 cm cube. कैसे किया उसने? उसने 25 cm cube लिया होगा, उसको इसमें ऐड किया, बाकी उसने distilled water ऐड कर दिया. इस काम को कहते हैं making the solution up. ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं ना कि it makes up, उसका मतलब है कि उसने उसमें 500 cm cube तक पानी ऐड किया होगा. And this is solution L. The student transfers 25 cm cube of L into a conical flask, adds 2 drops of methyl orange indicator. The solution M is 0.05 mole per dm cube sulfuric acid. अच्छा, हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसमें उसने methyl orange डाल दिया. Does anybody recall what color it will have? Sodium hydroxide is base. It's an alkali. So in alkalis, methyl orange is yellow. So we'll say the color should be yellow initially. Or if we keep on adding H2SO4 in it, there will come a time when the color changes from yellow to pink or red. And the reason is that you will have excess of H2SO4 in that. So that's the D part where they're asking us for color change. So it goes from yellow. How do you know it's yellow? Because शुरू में क्या है? शुरू में आपके पास sodium hydroxide है.
तो उसका सोल्यूशन का कलर येलो होगा मिथाइल ऑरेंज के साथ, ठीक है। और उसके बाद ब्यूरेट में M है, ब्यूरेट में एसिड है, और वो ब्यूरेट से जब इसमें ऐड होगा तो यू विल सी दैट इवेंचुअली द कलर विल चेंज बिकॉज यू आर रनिंग eventually you're going to have excess of sulfuric acid, and that's how you will know that the color has changed to red. In part C, they're saying, why is it wrong to wash out the burette with distilled water immediately before filling it? अब यहाँ पे आप देखो कि ब्यूरेट में हमने क्या ऐड किया है, ब्यूरेट में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया. And what do we know for sure about sulfuric acid? We know that this is 0.05 mole per dm cube sulfuric acid. And we know it correct to three significant figures. 500. Why have they mentioned those two zeros? Because it's showing that it's to three significant figures. So बहुत accurately उन्होंने बताया है how much sulfuric acid you have. Now, even if one drop of water was added extra to that, तो उसकी dilution हो जाएगी. Dilution means you have added more water, which means that the concentration will decrease. So you will disturb this value if you add more water. तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ब्यूरेट में ऐड करना है, उस ब्यूरेट में ही पानी डाल दो, उसको गीला कर दो, तो उसमें तो पानी बहुत सारा ट्रैप हो जाएगा, which means that when you add sulfuric acid उसकी concentration damage हो जाएगी, उसकी value fix नहीं रहेगी. So it is wrong to wash out the burette. हमेशा burette को dry करके आप करते हैं. क्यों? क्योंकि you do not want the concentration to be disturbed. Okay. So if you add it, it will change the concentration of acid. It will dilute the concentration, dilute the acid, or change the concentration of acid. ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे. Which is why it's a bad experimental procedure. All right, these are pretty simple. We know that we will take the final value from here, the initial value from here. Initially, this is 0.0. This one is 10.8. Notice that we basically read the value like this. We do not read it from bottom up. We read it from top bottom. So the next one is 20.2. Now this one would be 23.8. This one would be 34.9, and this one would be 44.5. You subtract them up, this comes out to be 33.8. This one, hold on. Does anybody have a calculator? Ji, sir. Can you calculate this? So 24.1. Thank you. And the next one? 24.3. Very good. Now you have to notice which one is the best result. Obviously, we'll say that the smaller one is better, but you know the difference between this and this is 0.2, and the difference between this and this is 0.3. So the two closest values, and they're the best one. So these are the ones we take. We take the average 24.1 plus 24.3 whole over 2, we'll get 24.2 cm cube. All right, ये क्या है? ये sodium hydroxide है. No, wait a minute. This is sulfuric acid. Okay, because M is sulfuric acid. Solution M is 0.05 mole per dm cube sulfuric acid. और इसी M की 24.2 cm cube हमने volume use किया है. So what is the number of mole? Number of moles is concentration times volume. I'm dividing by 1000 because I want to convert it to dm cube. So that way, my answer will be, again, you guys need calculators for this. 0.00121 into 10 power minus 3 or 0.00121. Yes. ठीक है, ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं M के. M एसिड है. एसिड के बारे में अब हमें क्या क्या पता है? हमें मोल्स पता है, हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है, हमें वॉल्यूम पता है. हमें तीनों चीजें एसिड के बारे में पता है. हमें बेस के बारे में क्या पता है? बेस के बारे में हम कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि हमें वॉल्यूम पता है कि वो 25 cm क्यूब यूज हुआ है, लेकिन वो 25 cm क्यूब किस कॉन्सेंट्रेशन का था हमें नहीं पता. वो हम निकाल लेंगे. लेकिन okay, so this much of acid has been used. So how much of sodium hydroxide must have been used? Notice this. One of this uses 2 of that. So 1 uses 2. So 1.21 into 10 power minus 3 should be 21. Uses X, which comes out to be 2.42 into 10 power minus 3.
moles. So that's the moles of sodium hydroxide that we have. अब हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि 25 cm क्यूब में इतने मोल्स थे और ये सारे के सारे 500 cm क्यूब से आए थे. ठीक है. सो अगर 25 cm क्यूब में 2.42 into 10 power minus 3 था, तो 500 में ऑब्वियसली इसका आई थिंक 20 टाइम्स होगा. ठीक है. सो विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस एंड वी विल गेट 0.0484, if I'm not wrong. That's the number of moles that we have in the 500 cm cube. For this, I want you to go back and try to visualize उन्होंने किया क्या. उनके पास K था. K was sodium hydroxide. 25 cm cube K था. वो उन्होंने इस A में ऐड कर दिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड कर दिया और उसमें पानी ऐड कर दिया. अब इस पे एक बात सोचें, जब आप किसी चीज में पानी ऐड करते हैं, आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, यू आर नॉट चेंजिंग इट्स नंबर ऑफ मोल्स, यू आर ओनली चेंजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. You had 25 cm cube of K, you added water to it to make it L, 500 cm cube of L. So the amount of sodium hydroxide, the number of moles of sodium hydroxide that you had in K is the same one that you had in L. The difference is कि L की volume 500 cm cube है और K की volume 25 cm cube है. फर्क सिर्फ पानी का है, फर्क सिर्फ concentration का है. Number of moles same रहेंगे. That means कि यहां पर हमने जो 25 से 500 cm cube के moles निकाले, they are the same number of moles that were present in K. फर्क क्या था कि इसमें पानी ऐड हो गया था. ठीक है. So this is the number of moles that you had in K, so 0.0484. Same number of moles. So what was the concentration? The volume here is 25. So हुआ क्या, आपके पास K था जो 25 cm क्यूब था, उसमें कुछ अमाउंट थी, उसको आपने इसमें ऐड किया और उसके अंदर फिर पानी ऐड कर दिया और इस तरह ये पूरे का पूरा वॉल्यूम उसकी 500 cm क्यूब हो गई. लेकिन मोल्स तो सेम ही रहे. अब ये इसको आपने L कह दिया, इसको आपने K कह दिया, नंबर ऑफ मोल्स सेम है दोनों का. ठीक है. इसको कहते हैं हम डाइल्यूशन. सो ये डाइल्यूशन में आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं करते, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं. सो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं. व्हाट्स द कॉन्सेंट्रेशन? 0.0484 moles in 25 cm cube. So 25 cm cube, the concentration is what you'll get here. So you can simply calculate this and you'll know. Okay. Between each titration, the student washes the conical flask with water. ठीक है. A second student repeats the experiment but uses L instead of water. अब एक student क्या कर रहा है कि they are using water to dissolve it. So हर titration के बाद obviously कुछ ना कुछ उसमें रह जाएगा. उसको उन्होंने अगर water से करेंगे तो water सबको dissolve करेगा और they will be throwing that out. But with L is basically sodium hydroxide solution. That means कि वो जब उससे उसको वॉश करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रह जाएगी. ठीक है. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि आपको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करना पड़ रहा है, पहली बार आपने जब किया तो आपको उतनी वॉल्यूम नहीं डालनी पड़ेगी. क्यों? हो सकता है पहली बार में उतनी वॉल्यूम आप ऐड कर दें क्योंकि आपने एक ड्राई कोनिकल फ्लास्क लिया, बट नेक्स्ट टाइम आपकी कोनिकल फ्लास्क में पहले से कुछ बेस है और आपने उसके अंदर फर्दर 25 क्यूब ऐड कर दिया, तो अब आपके पास पहले से टू रिएक्ट विद इट. ठीक है. टू बोरो वर्ड्स फ्रॉम अ वेरी फेमस पॉलिट दिस कंट्री, ज्यादा बेस होगी तो ज्यादा एसिड यूज होगा, कम बेस होगी तो कम एसिड यूज होगा. तो यहां पर आपके पास when you are washing it with L is basically a base, an alkali. When you're washing it with that, you will need to react it with more acid ताकि वो neutralize हो जाए. इसका मतलब है कि the student who is using L to wash it compared to a student who is using water to wash it,
the student with base will get larger values of titration. Okay, so that's a problem that they'll face. It will be larger because they have more, they need more acid to react with more alkali. Okay, all right. You are provided with mixture of copper 2 carbonate and carbon. Okay. Carbon, what's the color of carbon? Does anybody know? Black. Black, very good. And will copper 2 carbonate be white or will it be colorful? You're not required to know the color. So colored. Why would it be colored? So transition metal. Yes, it has a transition metal in it, which is why it will be a colored salt. Okay. They're saying that copper 2 carbonate reacts with sulfuric acid. That means it is a basic solution, at least. Basic salt. It could be amphoteric, but at least it's basic. And forms an aqueous solution. That means it also dissolves in water. Carbon does not react with or dissolve in dilute sulfuric acid. Okay, we know that. Use this information to plan an experiment to produce a sample of pure carbon. Pretty simple. This is just like having salt and sand. Salt dissolve होता था पानी में, sand dissolve नहीं होती थी पानी में. ठीक है? अब यहां पर क्या हो रहा है कि हमारे पास दोनों चीजें वाटर में तो इनसॉल्युबल हैं, लेकिन H2SO4 is playing the role of what water was doing in that case. We have carbon, which is insoluble in H2SO4 solution. We have copper 2 carbonate, which is soluble, which reacts and then it becomes soluble, right? So हमारे पास अब क्या है कि जो sand, salt, water वाली example थी, sand, salt, water. Water was the solvent, right? यहाँ पर हमारे पास H2SO4 हो गया. Salt की जगह पे salt was the soluble thing. उसकी जगह पे हमारे पास copper 2 carbonate हो गया है, solid है. और sand की जगह पे यहाँ पे हमारे पास carbon solid हो गया है. So no problem. If you wanted to get sand in that experiment, if you remember, तो आपको क्या करना था? आपको इन दोनों को मिक्स करना था, स्टर करना था, रिएक्ट करवाना था, फिर उसके बाद फिल्टर करना था और फिल्टर करके सैंड को ड्राई करके अलहदा मिल जाना था आपको. यही करते हैं ना? So that is exactly what we are going to do here, except we are going to use these names, not that. But other than that, कोई experimental procedure में change आने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है? So all we have to write is कि first of all जरा sand salt water वाले को सोचें. सबसे पहले हम क्या करते? Add water, stir it. ठीक है? अगर आप जल्दी डिसॉल्व करना चाह रहे हो हीट भी कर सकते हो. उसके बाद फिल्टर, देन ड्राई द रेजिड्यू या वॉश द रेजिड्यू विद डिस्टिल्ड वाटर एंड ड्राई इन folds of filter paper. That is what we would have written for sand. Now let's try to do that with carbon carbonate and H2SO4. We'll say add acid and stir, or we can also say that heat it. Then filter the carbon out, then wash the residue with distilled water and dry in folds of filter paper. कोई फर्क नहीं है सिवाय चीजों के नाम के, रोल उतना ही है. एक प्रॉब्लम है. The question on sand, salt and water would be of 3 marks. 1 for adding water and stirring, obviously mixing. 1 for filtering, 1 for washing and drying the residue. लेकिन यहाँ पे 4 मार्क्स का सवाल है. वो 4th मार्क किस बात का है? वो 4th मार्क किस बात का है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. सो बबल्स होंगे. तो आप जब फिल्टर कर रहे हो आप बबल्स होते होते फिल्टर नहीं कर दोगे उसे. यू विल वेट. You add acid, stir it, heat it if you want, but you will wait until all the bubbles have been given off, because that means all the copper carbonate or acid that you have has reacted. इसका एक और मतलब भी बनता है कि हमें H2SO4 we need to add it in excess because we want all the copper carbonate to react.
So that's just one extra mark that you will get because of your superior experimental skills. So let's recap. We will say that we add H2SO4 solution in excess, stir or heat if you want, until all the bubbles are given off, until there are no more bubbles. Then filter, wash the residue with distilled water, and dry in folds of filter paper. And there you go. That's a perfect answer. All right. A solid mixture R contains 2 cations and 1 anion. Okay. The table shows the test that the student does on R. Complete the table. Identify any gases that are formed in the test. इस सवाल में एक बड़ी अच्छी बात है, उसने हमसे गैसेस के टेस्ट करने का नहीं बोला. They have just asked us to identify. आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो भी गैस आपके पास आनी, 3 तो गैसेस हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, 3 ही आती है हमारे पास. ठीक है, तो हमें उसके टेस्ट देने की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, R is dissolved in water. A colored solution is formed. Observation है कि colored है, इसका मतलब क्या है कि transition metal ion present. You will not say that this is transition metal. You will say transition metal ion present या transition metal present. ठीक है, ये हमारा conclusion है उसकी बेस पे. To a portion of the solution, aqueous ammonia is added. अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया? यूजुअली बच्चों को होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले ऐड करते हैं, सो अमोनिया बाद में ऐड करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कोई गॉस्पेल नहीं है जहां पे लिखा हो कि आपने ऐसे करना है. You can simply do it any way you want. If you want to test with ammonia first, go ahead. So यहाँ पर उन्होंने बच्चों के वो जो रट्टाबाजी की आदत है उसको तोड़ने के लिए they have asked us to use ammonia first. So let's see. We know that we are going to test for chromium and iron. So what's the solution? We are adding aqueous ammonia. So observation would be you will see green precipitate. अब green कहना काफी है. You don't have to call it dirty green or any other shade of green that you want. Just writing green is good enough. Green precipitate. Okay. An excess of aqueous ammonia is added to the mixture. We know that chromium 3 and iron 2 both are insoluble in aqueous ammonia. So we will say that the precipitate is insoluble. Remember, in cations, there are 2 tests. First is the color test. Second is the solubility test. If you have any problems, you can go and revise it from the video that I've uploaded on Google Classroom, in which we tested all these. So first test is always color test. Second is always solubility test for cations that we have. So color test में हमने बता दिया कि green precipitate है. Solubility test में हमने बता दिया कि वो dissolve नहीं हुआ. C part पे आ जाते हैं. Aqueous sodium hydroxide is added until a change is seen. वही green precipitate नजर आएगा. These are transition metals. They usually behave in a similar fashion if you're dissolving in aqueous solutions. ठीक है? And the solubility would be that chromium is the one that dissolves, iron 2 does not dissolve. So यहाँ पे उसने बोल दिया कि chromium है, इसका मतलब है it dissolves. Precipitate dissolves. That's what we'll write. Okay, the mixture from C2 is warmed and the gas is formed. Gas formed is tested with damp red litmus. Red litmus हमारे लिए बहुत बड़ा hint है. मैंने आपको बताया कि 3 गैस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ammonia. These are the ones that we usually get in these tests. ठीक है, तो ammonia is the only gas in your syllabus that is alkaline. तो यहाँ पे वो red litmus को blue कर रहा है, तो कौन सी गैस है? अमोनिया गैस प्रेजेंट है. तो विल सिंपली राइट अमोनिया. आप उसका नाम लिख सकते हैं, आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं. ठीक है, अब अमोनिया गैस आई है, लेकिन टेस्ट तो आयंस का था और उसने बोला था कि 2 कैटायन है. तो कौन सा आयन हमें अमोनिया गैस देता है? देयर इज ओनली वन, अमोनियम आयन. So we'll say ammonia gas given off from ammonium ion. All right, sulfate का test. अब इसके लिए remember the mnemonic that we made. Please call back. Lead sulfate insoluble होता है, calcium sulfate insoluble होता है, barium sulfate insoluble होता है. ठीक है, तो हम उसको टेस्ट करने के लिए बेरियम यूज कर लेंगे. हम बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे. So add barium nitrate. अच्छा, usually anions के टेस्ट में we usually do this कि हम नाइट्रिक एसिड भी ऐड कर देते हैं. क्यों? एसिड कार्बोनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, अभी हमने देखा था. तो we add
a few drops of nitric acid. Nitric acid इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो खुद प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, वो बस डिस्ट्रॉय करता है कार्बोनेट्स को. कोई और एसिड होगा वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर सकता है. Nitric acid is a safe thing to go with. So we add nitric acid followed by barium sulfate. याद रख लें, कभी भी बेरियम आ गया टेस्ट में तो वो सल्फेट का है, सिल्वर आ गया तो वो हेलोजन का है. ठीक है. सो बेरियम नाइट्रेट एडेड, white precipitate seen. That's your observation. White precipitate seen, sulfate ion आ जाएगा. And that's it. That's good enough. All right. A student investigates the temperature rise when different masses of magnesium are added. क्या कर रहा है ये? ये टेम्परेचर को मेजर कर रहा है डिफरेंट मैसेस से. रीड करना सीखें. यहाँ पर मैस को चेंज करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करेगा. सवाल उसने इसी के ऊपर पूछने हैं. ठीक है. ना वो मेटल चेंज कर रहा है, ना वो एसिड चेंज कर रहा है. और एसिड अगर रख रहा है तो फिर उसे क्या चीज चेंज नहीं करनी चाहिए, उसको चाहिए कि वो कॉन्सेंट्रेशन सेम रखे. क्योंकि टेस्ट तो वो कर रहा है कि मास चेंज करने से टेम्परेचर कैसे राइज करता है, ये टेस्ट कर रहा है ना वो. दो वेरिएबल्स होते हैं हमेशा, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर होगा मास, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा टेम्परेचर राइज. सो इस स्टूडेंट को चाहिए कि वो एसिड की कोई चीज चेंज नहीं करे, कांस्टेंट रखे उसको, तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखे उसकी. मैग्नीशियम चेंज करता जाएगा वो. ऑल्सो उसको चाहिए कि एसिड एक्सेस में यूज करे, और उसने बता दिया कि वो 100 cm³ यूज कर रहा है, तो आई एम गेसिंग कि वो एक्सेस में ही होगा, बट वी आर नॉट श्योर, हमें देखना पड़ेगा. ऑलराइट. पोर्स 100 cm³ sulfuric hydrochloric acid into a beaker. Okay. Places a thermometer in the acid. Thermometer को पहले रखना क्यों जरूरी है? ताकि हमें इनिशियल टेम्परेचर मिल जाए. हम फॉरन मैग्नीशियम ऐड कर देंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हमें इनिशियल टेम्परेचर नहीं मिलेगा. तो हमें रूम टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, उस एसिड उस सोल्यूशन का टेम्परेचर देखना जरूरी है. तो उसने पहले थर्मोमीटर ऐड किया और रिकॉर्ड कर दिया. ओके. तो उसको पता लग गया जी मेरा स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या है. Adds a known mass of magnesium to the acid. तो उसने उसको पहले मेजर किया होगा. अब जब आप मैस को मेजर करते हो, आप कैसे मेजर करते हो? आप एक खाली कंटेनर लेते हो, उसका मैस देखते हो, फिर आप उसमें कुछ ना कुछ मैग्नीशियम ऐड करोगे, उसका नया मैस देखोगे. दो वैल्यूज हैं, एक स्टार्टिंग है, एक एंडिंग है. रिमेंबर, wherever there is change you need two values. तो जैसे टेम्परेचर के लिए आपको दो वैल्यूज चाहिए ना, आपको एक इनिशियल वैल्यू चाहिए, एक फाइनल वैल्यू चाहिए. जैसे ही वैसे ही आपको मैग्नीशियम के मैस के लिए भी एक कंटेनर की मास चाहिए होगा और एक मैग्नीशियम के साथ उस कंटेनर का मास चाहिए होगा. You subtract them, you'll know how much mass you have added. Records the highest temperature reached. Highest temperature का मतलब है कि सारे के सारे रिएक्ट कर गया जी. Alright, temperature rise with each mass of magnesium is less than expected. टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है? टेम्परेचर थर्मोमीटर से आ रहा है. थर्मोमीटर वो मेजर करेगा हीट जो कि उसको वहीं पे सराउंडिंग में मिल रही है. अगर कोई हीट लॉस हो जाएगा तो थर्मोमीटर तो उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई द एक्चुअल हीट गिवन ऑफ इज हायर देन द वन दैट वी रिकॉर्ड विद थर्मोमीटर. ठीक है. सो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि देयर इज अ हीट लॉस. अब हीट लॉस क्यों नहीं होगा? मतलब इस बंदे से पूछो, हीट मेजर करने का, टेम्परेचर मेजर करने का क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने उसे खुला छोड़ा हुआ है. कोई लैगिंग नहीं है, कोई लिड नहीं है, कोई इंसुलेटेड कंटेनर नहीं है. और ग्लास के बीकर्स होते हैं, इनकी तो वॉल्स इतनी पतली होती हैं, हीट फौरन बाहर निकल जाएगी. ठीक है. सो इस स्टूडेंट को खुद अकल करनी चाहिए, और जब वो नहीं कर रहा है तो आपको तो पता है, तो आप उसको समझा सकते हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली what the examiner wants you to do in a part 2. वो कहता है state two changes that can be made to the apparatus so the temperature rise for each mass is closer to the expected value. तो क्या है? कॉमन सेंस है. इंसुलेशन लगाओ, बीकर यूज ही नहीं करो, यूज ही वो चीज करो जो कि हीट बाहर निकलने नहीं देती. अभी सर्दियां गुजरी हैं, टेक आउट पे आपको कॉफी लेनी है, आप किस कंटेनर में लोगे? उस कंटेनर में लोगे ना जो कि हीट बाहर नहीं आने देता. पॉलीस्टाइरीन कप में ले लो, थोड़ा कार्डबोर्ड के कप में ले लो, बट पॉलीस्टाइरीन इज बेटर. ग्लास कंटेनर में जरूर लेना है जिसकी थिन वॉल्स हैं. तो आप ये बता सकते हैं उसे कि भाई इंसुलेशन लगाओ, पॉलीस्टाइरीन कप लो और ऊपर लिड रखो. If you have been to McDonald's, you are a very good experiment. You have very good experimental skills. ये एक्सपेरिमेंट तो आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने कॉफी खरीदी है जिंदगी में.
ऑलराइट, यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, यहाँ से आपको रीड करना है। आई एम अज्यूमिंग एवरीबडी नोज दिस। देखें उसने मैथ्स डिफरेंट यूज़ किए हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और उनके लिए हमें वो पूछ रहा है टेम्परेचर बताते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर और टेम्परेचर राइज। इनिशियल टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए, वो हमें दे दिया उसने, ठीक है। सो इनिशियल टेम्परेचर से आप देखोगे कि फाइनल का कितना डिफरेंस आ गया, और वो आप यहाँ पे लिख लोगे। What evidence shows that the reaction is an exothermic? There is a change in temperature that is positive. Temperature increase कर रहा है, heat given off. That means it's exothermic. और यहाँ पे हमारे पास heat 20 से तो ज़्यादा ही है ना, 20 हमारा starting point है। इन सब की values 20 से ज़्यादा है, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। Then we have to plot it. As far I won't actually plot it, but I will just tell you how to plot them. Make sure कि there are two accepted ways of plotting a point. One is कि ये छोटे 4 बॉक्सेस देख रहे हैं आप, पिक एनी वन ऑफ देम, और आपका जो क्रॉस होगा वो ऐसे होना चाहिए, वो 4 छोटे बॉक्सेस से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आप क्रॉस नहीं यूज कर रहे, डॉट यूज करें, तो आप डॉट लगाएं, जरूर लगाएं, लेकिन उसको फिर सर्कल भी कर लें, और वो सर्कल भी आपका 4 से बाहर नहीं आना चाहिए। अच्छा, कुछ मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जो आपने नहीं करनी, बिकॉज यू आर एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट लगाना इतना सा काफ़ी होता है, ये बनाना उसको ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लाइन इसमें से गुजरेगी तो लाइन यहाँ से गुजरे, लाइन यहाँ से गुजरे, लाइन यहाँ से गुजरे, कैसे पता लगेगा? अगर आपके पास एक डॉट होगा, उसमें से लाइन गुजारना बड़ा आसान है, आपको पता है कि कहाँ से लाइन गुजारनी है। तो कभी भी अपने डॉट को बड़ा नहीं होने दें, छोटा रखें, उसको इन सर्कल जरूर कर दें, पता लग जाए कि कहाँ पे है वो। और अगर आप क्रॉस यूज कर रहे हो तो क्रॉस तो फिर बहुत आसान है कि जहां से क्रॉस का सेंटर है वहां से गुजार लो लाइन। इसको करने के लिए पेंसिल यूज कीजिए, डू नॉट यूज पेन और पॉइंटर और एनी अदर थिंग। बाय द वे, रिमूवेबल इंक तो कभी भी यूज नहीं करनी एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम स्कैन होते हैं, हीट अप होके बहुत सारी इंक्स जो है वो स्प्रेड अराउंड कर जाती हैं। तो ट्राई नॉट टू यूज रिमूवेबल इंक्स, आप वो पेन यूज कीजिए जो रिमूव नहीं होता है। Alright, these values, what is the temperature rise when 0.35 grams of magnesium is used? आपको वो एक एक्सिस की वैल्यू दे रहा है, दूसरे एक्सिस की वैल्यू पढ़ाना चाह रहा है आपसे, आप बता दें। इसी तरह अगले में वो कहते हैं 0.15 पे क्या होगा, ग्राफ बनाया हुआ है, 0.15 से देख लो। अगले में वो आपको टेम्परेचर की वैल्यू दे रहा है, आपसे मैथ्स की वैल्यू मांग रहा है, फिर अब उसने वाई एक्सिस दे दिया, एक्स एक्सिस मांग रहा है। आगे वो कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ मैग्नीशियम दैट रिएक्ट्स विद ऑल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये वो है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, कि जहां पे सारे के सारे टेम्परेचर रिएक्ट कर गया, सारा मैस रिएक्ट कर गया, तो ये आप वहां से देख लोगे, ठीक है। मिनिमम मैस इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा वाला तो करेगा ही, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा रह जाएगा, लेकिन उतना मिनिमम तो आपको वहां से आएगा, तो ये लाइन आपको वहां से मिलेगी। और फिर इसी मैथ्स को यूज करके वो आपसे अगले क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है। सो आई जस्ट टेक अ रैंडम वैल्यू, लेट सपोज वी से कि ये वैल्यू है 0.05 ग्राम्स। अगेन आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, लेट सपोज ये इतनी है, 0.05 बहुत छोटी वैल्यू है, हम कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, हम 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट द राइट आंसर, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट इज 0.5 ग्राम्स हमने ले लिया। यूज योर आंसर टू E4, ये जो 0.5 लिखा है, to calculate number of moles of magnesium that reacted with this. So number of moles कैसे आएगा, mass over mr, so mass over ar करेंगे क्योंकि magnesium solid है। So 0.5 over 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0208। 3 significant figures जरूर रखिएगा, don't forget. So this is the moles of magnesium that we have. Magnesium reacts with sulfuric acid, hydrochloric acid. Calculate the concentration of hydrochloric acid. Okay, हमें पता है कि 0.0208 मैग्नीशियम का मोल्स है, और रेशो क्या है 1:2, तो HCl इसका डबल होगा, तो वो 0.0416 मोल्स बन जाएगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम हमें कैसे पता चलेगी, ये वॉल्यूम हमें ऐसे पता चलेगी कि हमने देखना है कि कितना वॉल्यूम यहां पर यूज हुआ था। 100 cm³ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ था, तो हम मोल्स हमारे पास हैं, इनको हम 100 cm³ में डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है।
तो 0.0416 over 100 into 1000, सॉरी डिवाइडेड बाय 1000, बिकॉज हमने सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, 0.0416 into 10 हो रहा है, तो 0.416 मोल पर डीएम क्यूब आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू नो कि क्या रिएक्शन है। ब्लैंक पेजेस गिवन होते हैं बिकॉज यू माइट वांट टू डू एक्स्ट्रा वर्क, यू माइट वांट टू कैंसल सम वर्क एंड मूव ओवर है, तो आप एग्जामिनर से कह सकते हो कि माय आंसर इज ऑन पेज नंबर 15, माय आंसर इज ऑन पेज नंबर 14, और एग्जामिनर उसको पढ़ सकता है। सो मेक इट इजी फॉर यू एज वेल एज द एग्जामिनर। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस?